Hello, good morning student. Today we are going to start our new point of this lesson, that is a heat exchange. Yes, it's a very interesting point. It's a very small point we have done here. Yes, how the heat goes to the exchange here. In our daily life, we get the different types of the changes. Just okay, they show the relation to these heat changes phenomenon. This is a very simple examples we have takes in our daily routine life. So we have let us to start or learn this point, that is a heat exchange. So come to the point. Yes, there is one have a simple question. Yes, I have tried to ask to you all student. Yes, if you have put it two object very close to with each other. Yes, out of them one is a hot or another is a cold. Yes, okay, and that time what happened? So we have considered here. Suppose I have put here the ball. Suppose I have take here one ball which is made up by the iron material having the 1 kg mass. Yes, but it is a hot in condition. Again I have take the another ball, that is a B ball having the same mass, that is 1 kg. Yes, but it is in cold. These two objects I have put closely with one another, close to one another. That time what happened? What you conclude here? That time is easily, obviously you have said, means the heat is a transfer from one object to the another object. Means heat transfer from is A ball to B ball. Why? Because we have said the heat transfer from A ball to B ball, because A ball is a hot and B ball is a cold. ठीक है, and always heat transfer from higher concentration to the lower concentration. We have already learned in a previous class. It's okay, and this is a transfer of the heat. So heat transfer, heat exchange here. Actually there is a heat energy transfer from higher concentration to the lower concentration. We have already learned here in previous classes. I have say in all the detail. Yes, in this previous class we have learned actually here. Yes, here we have get an experience. Which experience we have get here? What we have conclude here means here is energy exchange. There is an exchange of heat energy. Exchange of heat energy from ball A to B. You know, from ball A to B means heat transfer here, heat exchange here. Actually, energy exchanging process, yes, it is a continuous until up to the both ball become a same temperature. Both ball become a same temperature, है ना. एनर्जी फ्लो कायम रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, है ना बेटा. जैसे कि ए बॉल की एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा है, पी की यहाँ पे कम है, लेकिन एक्चुअली एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी एंड इट्स वन गोज कंटिन्यू. यस ओके, कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक ये दोनों बॉल, यस, देयर heat quantity became equal or the same. Yes, okay, and when heat energy of the both ball became equal in quantity, that time there were no any transfer of the heat energy. ठीक है, means what we have learned here, clearly we have learned here, yes, heat is always transfer from higher concentration to the lower concentration, and when they become equal in amount, that time the energy flow actually stop there. Energy flow actually stop there. So I have given good example. We have get experience in daily life. It's very easy. So I ask one another question. Yes, do you take a daily bath? Yes, it's very interesting question to you. That time your answer is yes. Yes, you take the regularly bath here. And when you take the regular bath, that time we require the hot water. Yes, we demand the hot water. Just okay. And when mommy give the hot water to you,
That time what we have do there means firstly we have insert the fingertips, yes, and get the sense of that water. Actually we have a get it hot. That time yes we have added the another cold water in it. Yes, okay, and we have adding continue cold water in it. Yes, up to the getting that is a favorable temperature of that water. If you get the favorable temperature of that water, that is a mixture. Yes, okay, and such a favorable temperature, yes we have adding mix the cold water and we have prepare it's a that's a normal as like according to our requirement. Yes, we have maintained the temperature and we have used for our taking the bath there. Just okay, and we have take the bath. It's a daily and the common terms if you have known to you all. Just like this is one common in this phenomenon. What we have learned here, we have learned here, देखिए, suppose this is one have a bucket containing hot water. ठीक है, it's a hot water having near about 60 degrees Celsius temperature. Again, but 60 degrees temperature is a more there, and that's why you added a cold water. Yes, near about having a 21 degrees Celsius. This temperature we have added it, and when we have added it, yes, up to the making the normal to its according to our requirement temperature. Yes, okay, and we have maintained the temperature of that water. That time what happened means this cold water became a hot and hot water became a cold. Actually, what you will learn here means there is a देखिए बेटा the cold water absorb the heat energy. Cold water absorb the heat energy and became a is raising in temperature, became a hot, and hot water they lose the temperature and became a cold here, just like this. And this is exchange here, this is a exchange here. ठीक है ना बेटा? तो देखिए 60 डिग्री सेल्सियस ने क्या कर दिया, टेम्परेचर को रिलीज कर दिया है यहाँ पे. It's a released temperature, that's why I have indicate here the upward arrow. Yes, okay. Again 21 डिग्री सेल्सियस, यस देयर टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली वो एब्सॉर्ब कर रहा है ना, कहाँ से, ज्यादा एनर्जी से एब्सॉर्ब करता है. तो यहाँ पे कोल्ड वाटर बिकेम हॉट, जस्ट ओके, दैट इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी. कहाँ से एब्सॉर्ब कर रहा है, फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस से, दैट्स अ हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एंड दिस इज अ ट्रांसफर एनर्जी मीन्स दिस ट्रांसफर. Yes, we have get the one flow there, and that is one have exchanging. That is one have a exchanging here. It's one have a simple term. Yes, that is a heat exchange here. देखिए अपने यूनिट का ये नाम ही है heat exchange. Actually, a this is a shown in your diagram also. There are two objects. Out of them, one is hot. I have shown as like it is one hot object, another is one have a cold object. ठीक है, and we have put it just close to with each other and explain such a theory here. Such theory we have read it continually we have read it and we have understand it. It's very simple and easy, very simple and easy. Just okay, it's very small unit of this lesson. So can you notice in this process, अभी देखिए बेटा, what you have noticed in this process, you have noticed in this process means the water is more hot. देखिए water is a more hot. Yes, okay, हम क्या करते थे, yes, in into that bucket just then we have added the cold water until it become a just normal favorable condition temperature. Yes, our necessity or our required situations we have, yes we have make the we have maintain the temperature of the water here. ठीक है, so do you think here means we have get this conclusion here, which conclusion, that is one have exchanging the heat energy, exchanging the heat energy. समझ में आ गया बेटा? चलिए मीन्स हीट एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, तो हीट एनर्जी यहाँ पे जस्ट दैट इज अ लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट. देखिए हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट एनर्जी को लॉस करता है. ठीक है, और उसी समय क्या हो रहा है बेटा, कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट एनर्जी को गेन करता है. ठीक है, मीन्स and actually by this getting one conclusions, yes we have, yes
get the one effervescence or the conclusion here. This which conclusion here means the heat energy lost by the hot object is always equal to the heat energy gained by the cold object, and this is called as, इसी को ही क्या बोला जाता है बेटा, that is now principle of a heat exchange. This is a very important according to the exam. Yes, okay, in exam, yes, there is one ask give the definition or the define the this principle of the heat exchange, give the principle. Yes, it's carry the 2 marks here with explanation. With the explanation, explanation is necessary. Yes, we have draw the diagram and we have explain it. Yes, okay, it's a very important here. Yes, okay, I have again repeated. Heat energy lost by the object is always equal to the heat energy gained by the cold object. Yes, okay, is called as a principle of heat energy. समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये देखिए बेटा, हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये दोनों को हमें ध्यान रखते हुए एक थ्योरी को हमें लर्न करना है. इट्स बिकम वेरी इजी, है ना. लेकिन यहाँ पे हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, इसकी मदद लेनी पड़ेगी, है ना बेटा. इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. अभी इसको कोऑर्डिनेट करते हुए हमें थ्योरी को लर्न कर सकते हैं. सिंपल सी यहाँ पे हमें टेक्निक्स मिलती है. वी हैव गेट कंक्लूड हियर एंड हाउ द हीट एक्सचेंज. यस, वी हैव गेट्स वेरी क्लियरफुल इन दिस पॉइंट. ठीक है, चलिए. एक्चुअली अगेन वी हैव कंक्लूड हियर. हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन और भी ड्रॉ कर दिया है. यस, विच कंक्लूजन हियर मीन्स दैट इज अ हॉट वाटर बिकम अ, देखिए ये जो हॉट वाटर था ना, ये हॉट वाटर कहाँ पे, यहीं पे, ये वाला हॉट वाटर बिकम ए कोल्ड. ये कैसा बन रहा है, कोल्ड बन रहा है. ठीक है, हॉट वाटर बिकम ए कोल्ड हियर. ठीक है, और जो कोल्ड वाटर था वो क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर, ये कोल्ड है ना, कोल्ड वाटर बिकम ए हॉट. ठीक है, ये हॉट होता है. एक्चुअली व्हाट यू लर्न हियर, वी हैव लर्न हियर द, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे एरो से बताने का प्रयास करता हूँ. दैट इज एक्सचेंज द हीट एनर्जी. यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या होता है बेटा, दैट इज एक्सचेंज हियर, है ना. यहाँ पे एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज द हीट एनर्जी. हीट एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से एक्सचेंज हो रही है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल वन देयर. सो दिस particularly experiment we have learned in different way. Here we have put the object, different object, one is a hot and one is a cold, we have put on a open place and we have learned the such experimental activity. But in further experiment we have learned in a different way. हम क्या करेंगे, अभी इसको एक डिफरेंट वे से लर्न करेंगे. ठीक है, एंड इन द डिफरेंट वे वी हैव यूज द वन एनक्लोजिंग कंटेनर. यहाँ पे देखिए एनक्लोजिंग कंटेनर. ठीक है, अभी इस एनक्लोजिंग कंटेनर को लेके देखिए, पहले मैंने यहाँ पे ओपन प्लेस पे रख दिए थे ऑब्जेक्ट को, लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक एनक्लोज्ड कंटेनर है. दैट इज yes, we have changed the system here, we have changed the system here, means in this process we have changed the system. अभी यहाँ पे सिस्टम को हमें क्या करना है, चेंज करना है. समझ में आ रहा है बेटा? तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, we have make the here one small change. Yes, and in this above activity, yes, we have repeat again but making a somewhat minute changes we have carried here. Yes, okay, we get the change here. Both object, ये देखिए both object, that is a hot object or a cold object. Yes, there is systems. Yes, from an environment we have changes it and we have put into the in a closed system, in a closed system. Yes, means it is a one heat register container. Here we have take here one heat register container. Heat register container क्या होता है, it is made up by the wooden material. Inside it there is a one woolen cloths. Yes, they made put it accurately that lining of that inner wooden containers, they are the total lining by that wooden cloths. Yes, okay, and inside it there is a one copper pot, it may be the situated inside it. Yes, okay, and they have a totally closed, just means they do not allow the
surrounding heat energy, yes, okay, and they do not release the inner heat energy in surrounding or outer side, yes, okay. And such a conditional, that is a resistor heat container, we have just select for this experiment, just okay. And we have put both object in it. That time what happened, yes, okay, means the surrounding temperature does not affect on that object, it's okay, because they are the totally, it's okay, enclosed into that particularly provide situations or the temperature, it's okay, means outer temperature or the surrounding temperature does not allow enter inside to that system, and inside system their temperature is not expelled throughout or the is not released in surrounding, just like this. Such condition we have maintain it, we have take it, just like this. That's activity we have carry such a presence of the heat resistor container, and due to its what happened, the resistor, yes, that's container, they do not expel through the inside energy, heat energy, or not allowed to the outer surrounding energy, that's the environmental heat energy, just okay. We have made such a situation and we have learn the activity again, we have get their observation again, ठीक है। तो देखिए इसी को लेके हम अभी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो in this situation what happened, so at that conditions, due to that conditions we have maintained the, yes, particularly we have maintained the condition, and we have learned here following principle, which principle, that is a losing heat energy by an object। ये देखिए losing heat energy, lose कौन करता है बेटा यहाँ पे, बताइए, हाँ हॉट ऑब्जेक्ट लूज करेगा, है ना बेटा, और गेन कौन करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करता है ना। इसी को लेकर जो प्रिंसिपल ऊपर जो बताया था ना, यही है ना बेटा, दैट इज अ लॉस ऑफ हॉट एनर्जी, यस, और द सॉरी हीट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन बाय दैट कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है, एंड दैट्स प्रिंसिपल। चलिए दोनों भी एक्टिविटी में हमने एक प्रोसीजर करके दिखे, एक ओपन प्लेस में देखी थी यानी कि ओपन सिस्टम थी, और दूसरा यहाँ पे हमने एक अनदर ढंग से, एक अलग से हमने यहाँ पे उसको लर्न करने का प्रयास किया। बोथ एक्टिविटी the same, but we have changed their system. This is a closed system, and in that closed system also have learned the same conclusion there, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों में कंक्लूजन कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें, हीट एनर्जी इज लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, yes, is always equal to the heat energy gained by that cold object, yes, okay. And this is called as a principle of heat exchange. Principle of heat exchange is a very IMP according to the exam view. So we have just learn it thoroughly, just okay, we have carefully read it, yes, and understand, ठीक है। So come to the another next slide of this part, just okay। So come to the next slide, that is a measurement of a specific heat, mixing methods and calorimeter, ठीक है बेटा। चलिए, so we have measure the specific heat, measure the specific heat, yes, by using the mixing method. What is the mixing method? Mixing method means we have used the mixture here. What is the mixture? That is we have take the water here. Just suppose one sample we have take a cold water, another sample we have take a hot water, and when we are added with each other, when we are added, that time it became a mixture. That is a mixture of a hot and cold water. Just okay. As well as we have take one solid also there. ठीक है, suppose we have put one water into the calorimeter and add another one any material body added into that calorimeter, and also we have do the activity, we have followed the activity, yes, okay, it is also have a mixing method. So by using the mixing method we have measured the specific heat, yes, and for this carrying the process there is a requirement one instrument, and that instrument name is the calorimeter. So what is the calorimeter? So देखिए बेटा मैं यहाँ पे अभी कैलोरीमीटर
बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो कैलोरीमीटर क्या होता है? वन सिंपल है, कैलोरीमीटर इज ऑल्सो मेड अप बाय वन वुडन बॉक्स। देखिए यहाँ पे एक वुडन बॉक्स होता है, ठीक है। एक्चुअली इन दैट वुडन बॉक्स देयर इनर लाइनिंग, yes, it is totally enveloped by one wooden or the woolen cloth. It's a totally inner lining is enveloped by the woolen cloth. Just okay. And in that inner lining of that woolen cloth, yes, there is a put one a small copper pot. That a copper pot. यहाँ पे कौन सा pot होता है बेटा? That's a copper pot. Copper material से बना वाला pot. ठीक है? It's situated inside the calorimeter. And there is a lead opening. There is a lead. यहाँ पे एक lead होती है opening. We have close it and we have open it. Why? Because the it is a calorimeter. And what is the function of the calorimeter? तो calorimeter play the important role, means it is a one closed system. ठीक है, means it does not affect to the surrounding climates or the surrounding temperature. Just okay, means it keeps the sample temperature remain same. ठीक है, understood, means that does not allow to other, means that does not receive the surrounding temperature and does not allow to yes expel the yes inner temperature to the outer, that is a surrounding there. ठीक है, and such like this one instrument of the apparatus we have used, that is a calorimeter here. समझ में आता है कैलोरीमीटर क्या क्या होता है? तो कैलोरीमीटर एक वुडन बॉक्स होता है, उसमें वुडन बॉक्स के अंदर एक वुलन से बनाया वाला एक लाइनिंग का इनर पार्ट होता है, उसमें एक कॉपर मटेरियल, कॉपर का एक मटेरियल से बनाया वाला एक पॉट अंदर ऐसा फिक्स किया होता है। ठीक है बेटा, और उसमें हम क्या करेंगे? वी हैव एडेड अ मिक्सचर, ठीक है, एंड वी हैव गेट देयर मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर एंड वी हैव स्टडी द स्पेसिफिक हीट। हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे किसकी? स्पेसिफिक हीट, मेजरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे एक क्या होता है? एक स्टैंड होता है, इसी स्टैंड को एक थर्मोमीटर यहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, थर्मोमीटर किसके लिए? फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए टेम्परेचर कैसे नोट डाउन करेंगे हम? चलिए अभी कैलोरीमीटर में वी हैव एडेड सम वाटर, मोर देन हाफ। कितना वाटर ऐड करना है कैलोरीमीटर में? मोर देन हाफ वाटर वी हैव एडेड इनटू दैट कैलोरीमीटर पॉट विच इज मेड अप बाय द कॉपर। ये ध्यान रखना है, कॉपर से बनाने वाला है। ठीक है, अभी उसमें हम आधे से ऊपर थोड़ा पानी भर लेंगे, है ना। फिर अगेन वी हैव एडेड वन मटेरियल और द वन मेटल बॉक्स। चलिए अपने कोई अपने बुक में जो एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करने के लिए बताया ना, वहाँ पे एक हमें मेटल का उड़ जैसे मेटल का एक छोटा सा बॉल लेना है। ठीक है बेटा, सपोज इट इज अ हॉट। ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर क्या है? शायद उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है बेटा, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला बॉल हम इसमें ऐड करेंगे। पहले हमें एक करने से पहले क्या करना है बेटा? यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में हमें क्या क्या लर्न करना है? देखिए टेबल ऐसा ड्रॉ करेंगे, इस टेबल में हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे गिवन मटेरियल, तो गिवन मटेरियल हमें कौन दिया है? चलिए बेटा, तो पहले हमें गिवन मटेरियल दिया है वाटर, है ना। तो एक वाटर है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे कौन दिया है हमें? एक फेरस से बना 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 हुआ एक बॉल है, दैट इज अ आयरन बॉल है। ठीक है बेटा, हैविंग सम हॉट मास देयर। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसका इनिशियल टेम्परेचर काउंट करेंगे। जैसे अभी इसका इनिशियल टेम्परेचर है, अभी जैसे पानी का इनिशियल टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर का वाटर यहाँ पे लेना है, सपोज इट्स नियर अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस। शायद रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 21 डिग्री सेल्सियस या 23 डिग्री सेल्सियस, है ना बेटा, इतना शायद। जैसे इसके अबाउट या ऊपर नीचे हमें टेम्परेचर मिलेगा। जैसे रूम टेम्परेचर का वाटर हमने लिया है इस 21 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, अभी फिर इसका जो बॉल है, इसका मेजरमेंट शायद यहाँ पे 87 डिग्री सेल्सियस है, फॉर वी हैव कंसिडराइज हियर। ठीक है, वी हैव टेक देयर इनिशियल रीडिंग, दीज आर द इनिशियल रीडिंग ऑफ द वाटर एंड मेटल बॉल। समझ में आ रहा है? इनिशियल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वी हैव नोट इन योर observation table is necessary. Yes, okay, because we have learned here the specific heat and measure the specific here heat.
by mixing method with the help of the calorimeter. Remember here, ठीक है? So we have put it there units measurements. Yes, it's important into the observation table. After then, what we will do here? Again, we will start our activity. So firstly, yes, we have added the water, read the thermometer temperature, take their reading into the observation table, and again add to that metal ball inside the water and close the lid of calorimeter. अब ये calorimeter की lid क्या करना है हमें? पूरी close कर लेना है. And when you close the lid of that calorimeter, that time what happen? Yes, means the system, that process goes on a continue here, and exchanging of the heat energy means the metal ball have a more concentration heat. That heat energy is a transfer. Yes, from, देखिए बेटा वहां पे ट्रांसफर होने लगेगी फ्रॉम आयरन बॉल टू द वाटर मीन्स द वाटर इज गोना हैव अ कोल्ड एंड ड्यू टू दैट yes okay there difference in their temperature. Yes, so it goes to the continuous, and when the temperature became a equal, yes okay, they have no any difference in between water and that's metal ball. That time the temperature flow is totally stopped there. Yes, and till till to this time, yes, its processes goes on continue there. ठीक है, for a taken a time, कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू रहेगी कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद फिर बंद हो जाएगी क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बोथ material, that's a water and metal ball, they become the same there. That time transfer is a totally stop there, no any exchange there. वहां पे कोई exchange हीट एनर्जी exchange नहीं दिखाई देगा. ठीक है ना बेटा? चलिए आफ्टर देन यस वी हैव टेक द रीडिंग्स. अभी देखिए रीडिंग लेना है अभी. चलिए हम रीडिंग क्या करते हैं, देखिए पहले इनिशियल रीडिंग लिए थे ना. यहाँ पे वाटर का इनिशियल रीडिंग कितना था बेटा? यहाँ पे 21 था. चलिए अभी यहाँ पे इनिशियल रीडिंग लेते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल रीडिंग में एक्चुअली मुझे यहाँ पे वाटर का रीडिंग मिलेगा 67 डिग्री सेल्सियस. कितना मिलेगा बेटा? यहाँ पे 67 मिलेगा. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे फेरस के बॉल का रीडिंग यहाँ पे पहले कितना था? 87 था. एक्चुअली यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे? चलिए यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे, यस एक्चुअली आई हैव गेट द जस्ट, तो यहाँ पे मुझे 62 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चेंजेस मिले हैं, मेजरमेंट्स मिले हैं. तो इन दैट मेजरमेंट आई हैव गेट द डिफरेंट वैल्यू, दैट्स नाउ चेंजिंग वैल्यू, दैट्स इनिशियल टेम्परेचर, एंड दिस इज अ after then certain interval time of the same interval time, yes we have take the readings, and that time we have get the readings are the totally differ. And these reading, what's indicate this reading? These reading indicates the exchange of the gases. ठीक है, so hot water, sorry, cold water became a hot and hot wall became a cold. है ना? कितना हॉट था? 87 तक हॉट था. तो कितना बना बेटा यहाँ पे? 62 बना, है ना बेटा? चलिए वाटर कितना था? 21 था डिग्री सेल्सियस, दैट्स वन आवर रूम टेम्परेचर. बट वो कितना बना? बॉल उसमें ऐड करने से yes 67 बना. Actually these are when our changes exchanging here, and we have learns here with the help of this calorimeter, and we have identify the specific heat, and we have measured the specific heat of that particular substance. अभी यहाँ पे जो सब्सटेंस हमने लिया है, कौन सा सब्सटेंस? यहाँ पे फेरस है. फेरस है ना, आयरन का बॉल है ना बेटा. तो हम इसको फेरस की हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे स्पेसिफिक हीट यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज इन प्रीवियस पीरियड वी हैव लर्न one formula there. Which formula? That specific heat is equal to m into c into delta t, है ना, mass of that substance. C is nothing but what? C is nothing but specific specific heat of that substance, and delta T is nothing but what? Delta T is nothing but change in a heat. ठीक है ना बेटा? चलिए पहले वाला जो हमने वो फॉर्मूला लर्न किया था उसे भूलना नहीं. उसे भूल गए तो ये आगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर. ठीक है, जो पहला है वो उसे याद रखते हुए हमें आगे चलना है. ठीक है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे. ओके, सो दिस इज वन है वो इम्पोर्टेंट हियर. अभी देखिए बेटा एक छोटा सा यहाँ पे भी
एक दूसरे स्थिति में, जैसे कि हमने यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पढ़ा था, क्या क्या लर्न किया था कि जैसे कि यहाँ पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हमने यहाँ पे अभी देखे हैं। तो अभी इसी चेंजेस को देखते हुए थोड़ा सा अभी देखिए बेटा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। चलिए अभी हम क्या करेंगे, थोड़े से इसको अभी कैलकुलेशन के और बढ़ेंगे। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं अभी, तो रीडिंग तो हमने लिए हुए, तो रीडिंग को हमें याद रखना है, ठीक है। अभी रीडिंग को याद रखते हुए हमें यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है, जैसे कल जो लर्न किया था उसी को लेकर वो फॉर्मूला यहाँ पे सही मिलता है या नहीं, इसको हम अभी यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो अभी यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो कैलोरीमीटर में हमने क्या क्या लिया था बेटा, तो कैलोरीमीटर में हमने सैंपल कौन सा लिया था, कोल्ड वाटर का। दूसरा सैंपल का क्या था, आयरन बॉल था, है ना बेटा। तो ये जैसे हमने ऐड कर दिया तो क्या बना, वो मिक्सचर बना उसका, है ना, आयरन और दैट्स अ वाटर, यस मिक्सचर, नॉट सॉल्यूशन, मिक्सचर, ठीक है ना, हमें पता है। तो देखिए, तो मिक्सचर हमें मिला। अभी मिक्सचर में टेम्परेचर में बदलाव आ गया है ना बेटा, तो यहाँ पे मिक्सचर का, जैसे वाटर का पहले इनिशियल टेम्परेचर, फिर बाद में मिक्सचर का टेम्परेचर, ठीक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इज नथिंग बट डेल्टा चेंज। चलिए, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा, इस ए वाला फॉर्मूला, जैसे कि देखिए Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1। तो यहाँ पे Q क्या होता है, तो Q इज द मास ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट, Q इज द मास ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो हमने आयरन का बॉल लिया था ना, उसका मास ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखिए हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर इज नथिंग बट, कैलोरीमीटर इज मेड अप बाय, हाँ बताइए, शाबाश, कॉपर से बनी है। तो कॉपर की यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, कॉपर की स्पेसिफिक हीट हमने लर्न किए है ना, तो वहां पे देखिए बेटा, तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट है 0.110, ठीक है ना बेटा। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है यहाँ पे, 1। ये याद रखना है बेटा, रिमेम्बरिंग टर्म्स है। हमने इसके बारे में पिछले पीरियड में एक टेबल भी लर्न किया था, वो टेबल को छोड़ना नहीं, है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी भूलना नहीं, ऑलवेज रिमेम्बर इट्स बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट yes in a solving the numericals. So actually we have gets the formula Q is equal to, Q बोले तो that is a loss energy, heat energy by that object is equal to the heat gained by the calorimeter, yes okay, plus heat gained by the water, water ने जो heat ली है ना, water heat, क्योंकि ठंडा था तो गर्म हो रहा है, तो उसने भी हीट ली है, तो इसी से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, Q। तो Q हीट लॉस है, तो हीट लॉस इज इक्वल टू, ये देखिए मास ऑफ दैट सब्सटेंस m, the specific heat of the calorimeter, yes okay, that's C, another that is a change in heat, that is a delta T। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। अब इसी फॉर्मूला को लेके हमें यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, द हीट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू राइज हीट टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। राइज हीट टेम्परेचर बोले तो चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। जैसे कि देखिए बेटा, तो यहाँ पे हीट, पहले गर्म जो आयरन का बॉल लिया था उसकी हीट कितनी थी, वो कितना हॉट था, 86 डिग्री, शायद कल्पना कीजिए वो 86 डिग्री का गर्म होगा शायद हॉट बॉल, उसको ठंडे पानी में हमने डुबो दिया कैलोरीमीटर में, इन क्लोज सिस्टम में, तो वो क्या होगा बेटा, तो उसका टेम्परेचर डाउन होते हुए कितना बन रहा है, 76 बनेगा, है ना। इस एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, 67 बनेगा। 67 बनने के बाद अभी देखिए इसमें हमें चेंज इन टेम्परेचर मिल रहा है, बदलाव मिल रहा है, तो कितने कितने का बदलाव आ रहा है यहाँ पे, नियर अबाउट 19 डिग्री, नियर अबाउट यहाँ पे कितना आता है बेटा, 90 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट्स डिफरेंस। चलिए, ये जो डिफरेंस यहाँ पे पता चलता है, तो ये हमें यहाँ पे एक्सचेंज हीट बताता है, समझ में आ रहा है बेटा। थोड़ा थ्योरी को
सेटिंग से रीड करना है, समझ में ना आए तो यहाँ पे पूछना है मुझे जरूर, ठीक है बेटा। तो वी हैव स्टॉप हियर, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, वी विल सी टुमारो, थैंक यू।